Saurabh, Sailesh, wonderful to see all of you back. This Happy Minds. This is Happy Minds number 1187. And all of you joined me on YouTube. Namaste, everybody. Welcome to this week's Happy Minds. Thank you for logging in, joining in, for taking your time out to making yourself a lot more powerful than what you are. Namaste, Hemant, Rahul, and all those, namaste kaha. मैं आप सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ because it will take a lot of time, but namaste everybody. ऐसी glance कर रहा हूँ, right from the akashas of my life to the Nareens of my life. क्या लिख रहे हैं नरेन? मेरा फेवरेट भजन, तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा. अरे वाह, क्या बात है. Love you for this. मंगेश, good to see you. पूनम, आज पूरा बियानी खानदान आया हुआ है लग रहा है. उमाकांत, सोनल, ममता, अरे वाह, great, Ratnali. And all those who have joined me for the first time, you can just type in first and maybe you can type in the city you're from. तो मुझे मालूम पड़ेगा आप लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं अगर आपने पहली बार हैप्पी माइंड्स को ज्वाइन किया है. So I'll just be able to connect from which city, which town, which part of the country you're from. Chandramohan, Sandeep, namaste, namaste, good, Prashant, Priyanka, सुशील ज्यादा हंस रहा है क्या? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सर वसूली. पूरे पूरे खानदान को लेके बैठा हूं मैं. चलो, ग्रेट. ऑल ऑफ यू, जस्ट वन क्वेश्चन टू स्टार्ट दिस हैप्पी माइंड्स फॉर दिस वीक. क्योंकि आज मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू शेयर एंड दिस समथिंग ब्यूटीफुल व्हिच आई वाज ऑब्जर्विंग द लास्ट मेनी डेज. तो मैंने कहा आपसे आज शेयर करता हूं. एंड the subject or title, if you were to give a title to it, subject यही रहेगा कि what battles are we fighting, और मैं देख रहा हूँ कि हम सब जो है we are all in a battle. We are all kind of fighting our own battles every day. और मेरा एक सवाल होता है खुद से, और मेरा सवाल होता है काफी लोगों को, उनको देख के जिस ढंग से वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिस ढंग से वो अपनी बैटल्स को फाइट कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी आर काइंड ऑफ फाइटिंग द रॉन्ग बैटल, एंड हम अपना पूरा समय, अपना पूरा एनर्जी हम कहीं किसी गलत लड़ाई को लड़ने में तो नहीं व्यतीत या खत्म कर रहे हैं. सो I'll share something on that, but before that, हाँ जी, राउर केला से कोई आया हुआ है. वाह, दैट्स नाइस. तो शायद बहुत बहुत सालों पुरानी है. हाँ, चलो चलो, welcome everybody, and those of you join me for the first time, you can just keep on typing which city, which country, which place, which world, which universe you're from. मुझे मालूम पड़ जाएगा आप लोग कहाँ कहाँ से आए हुए. चलिए, great. Those who join me for the first time, we start with meditation, then we start with some success stories, and then of course there is my sharing, which I speak and share on. तो आज की कुछ success stories हैं which are from the business world, mostly because March ending aa raha hai, to business world ki success stories hain. And the first one is from Dipesh Sancheti, and he says he messaged me a few days back, and he says, "Sir, I'm very grateful, highly grateful to you and Chrysalis, for we are about to close this year with a 5x of the sales of 2019 when I joined your batch, the Game of Business. So we are 5 times of that turnover, and with an additional 2 months of order at hand to complete." एंड शायद जो 2019 का इनकम टैक्स है, नहीं सॉरी, जो 2019 का इनकम है उससे ज्यादा इस साल का टैक्स भरा है हमने. आई आई लव दिस स्टेटमेंट कि जो टर्नओवर 2019 का था उससे ज्यादा टैक्स ही सेज वी हैव पेड दिस ईयर. And this is phenomenal. I love you for this because I feel that as entrepreneurs, as business owners, we earn and we create wealth. At the same time, we got to contribute to the country's wealth, and जितना हम टैक्स दे पाएंगे उतना ही वो टैक्स इस देश को अच्छा बनाने में इस्तेमाल होगा. So and with honest politicians, or with politicians who are much more concerned about taking this country ahead, तो मुझे लगता है हमारा पैसा सार्थक ही लगेगा. And he says, one more thing, sir, we are doing an entire house of Mr. Gadkari ji in Nagpur, and we are doing the entire building, and all the floorings and bathrooms are from us, from Indian Stone House. And Dipesh ka bada acha kaam hai.
not into he's into marbles and stones, but speciality here, Dipesh ki his entire stock is from India. He says, I want to promote Indian stones and Indian marbles. So no more Italian, Omani marbles. He says all Indian marbles, and it's phenomenal to see that Indian stones are being used, and in such a way, and then the demand has increased. So all the best and congratulations to you. Another success story is from Jaswinder Sokhi. He says, sir, we have grown 50% over the last year. Our second unit is also fully packed. And sir, agar aapko yaad hoga, there was a time, some months, some years back, when the machines were idle, and you asked me कि बहुत अमीरी आ गई है, कि ऐसी machines idle पड़ी हुई हैं, and you're not doing anything about it. And he says, now we are thinking of adding one more machine because we are packed. And this is also phenomenal news. So all the best to you, and thank you for sharing this, Jaswinder. And the third story is from Sumesh, Sunesh Sancheti. And Sunesh is doing my batch, current batch of Vara Samasti. And just a few days back, we were in the batch. And the break time, wo mere jaake bolta hai, sir, I have bought an office space. And I said, wow, this is fantastic. He says, sir, कई सालों से सोच रहा हूँ ऑफिस लेने का है, but it is always I am that on that edge, और फिर मैं लेता नहीं हूँ. And just one day with you, and I went home and I said, that's it, अभी मुझे ऑफिस लेना है. And I finalized the office, I paid the money. और ऐसा लग रहा था कि पैसा कहाँ से इंतजाम होगा, but everything fell into place. And we're going to move into a bigger space, and I'm sure ये जो ऑफिस हमारा है, ये हमारे आगे के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि डिसीजन तो उसी का था, पैसा भी उसी का है, एंड लेकिन कई बार ऐसा होता है, वी नीड समबडी हु कैन जस्ट कीप हिज हैंड ऑन आवर बैक एंड से टेक द जंप, टेक द लीप. हो जाएगा यार. आई थिंक दैट्स द केस विद मोस्ट ऑफ अस इन मेनी ऑफ आवर डिसीजंस, कि हल्का सा वो लीप ऑफ फेथ होता है ना, कि एक बस आपने एक कदम आगे लेना है, और वो कदम लेने की हिम्मत नहीं होती. और ऐसे में कोई अगर पीछे रहे और बोले बढ़ जाए, कुछ नहीं होगा. एंड मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे किसी के लिए बन गए, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी, किसी न किसी की जिंदगी में अगर हम वो हाथ बन गए, तो शायद बहुत सी जिंदगियां उस मुकाम पे पहुंच जाएंगी जहां वो पहुंच सकती हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं घबराहट होती है, कहीं एक अंदर से एक खिंचाव होता है कि ये सही होगा कि नहीं होगा. डर होता है, विल इट बी द राइट स्टेप, व्हाट इफ आई लूज. एंड उस डर के आगे पुश करने के लिए कोई तो इंसान लगता है अक्सर. So I'm happy that I could play that role for Sunesh, and he could take that leap. हाँ जी. So आप लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है? So how are you all this very morning? चलो, let me know how you're feeling this very morning. कैसे हो आप लोग? I've shared a few success stories with you. ये सुन के या overall आप कैसा? How are you all feeling? Jakash, great. कुछ लोग मजबूरी में लिखते हैं ग्रेट. अद्भुत, जबरदस्त, क्या बात है. अभी भी आएगा, देखो नरेश का आएगा. नरेश इज बिजी टाइपिंग सब. संतोष, पीसफुल, आयशा, एनर्जेटिक एंड किकिंग, फैंटास्टिक. पूजा, वॉरियर, शाबाश, ऑसम. आज कोई युद्ध में जाने वाली है लग रहा है पूजा. लाइवली, हैप्पी मार्च एंड टू ऑल, शाबाश. हैवी बिजनेस से निकले नहीं तो सुभाष. Yeah, I knew Naresh would come in. Tuck, tuck, tuck. Chalo, good, good. With all of you feeling tuck, 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 great, vibrant, lively, enthusiastic, passionate, mad, warrior. Let's kickstart this happy minds. Sonali says totally into listening mode. बिल्कुल disturb मत करिए सर, हम बिल्कुल listening mode में हैं. You don't disturb us in any way. Okay. चलो, inspiring. Fight. And आज का टॉपिक है warrior. अच्छा, ठीक है. Okay, चलो, let's kickstart this happy minds.
और आपको अगर लगता रहेगा ना कि you want to share something with me, you want to, so you can take your hand up and please do share, and you can key in, you can take your hand up. I'll keep on reading your comments. I'll invite you if you have your hand up. So ऐसा करके ना एक engagement हो जाएगा, and I think that engaging HM is always very powerful. अंजलि अनुजा क्या लिखती है? Feeling even more grateful and emotional as tomorrow marks the completion of 1 year with Life 360. अरे वाह, great. Thank you for this lovely note. And Anuja, you know, time and again, it has happened, and you are one more reminder to that fact that so many, there are thousands of Chrysalians who remember their batch timings, batch dates, batch numbers. They remember their batch anniversaries, and it is so nice because somewhere it reflects कि आप उस मोमेंट को या उस इनिशिएटिव को या उस इंटरवेंशन को आप अपने दिल के कितने करीब मानते हो, कि अगर आपको याद है कि 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, and there have been thousands of people there. I remember I was coming uh, back from one of my training interventions from Lonavala some around 10-15 years ago, and उस समय हमारा एनुअल डेज होते थे. तो एनुअल डेज वर big huge days, मतलब ऐसे 1000 लोग हॉल के अंदर हैं, and every year we would celebrate. So 10th of August would be the annual day of Chrysalis. And I'm just Anuja के sharing से मैं हल्का सा उसको आगे ले जा रहा हूँ. And 10th of August is the annual day of Chrysalis, and that's the day when all Chrysalians, they would जितने भी होते थे Chrysalians, and उन दोनों बड़े youngsters would be there from college and from you know, the early work days of their life. So they would be there and they would celebrate and they would get together and ensure that annual day of Chrysalis is a big event in the city of Pune. And उस डे को 10th अगस्त को बहुत सारे हम लोग क्या करते थे, बैचेस का ग्रेजुएशन भी उस दिन करते थे. सो बहुत सारे ऐसे क्रिसेलेंस हैं जो 10th अगस्त को दिल के बड़े करीब मानते हैं. सो आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, एंड the subject was all about creating an ecosystem around you, creating a culture in the company which is where a sense of ownership takes place, and that's my favorite subject. I speak a lot on this aspect. And I said, I was talking to them that what would be the इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि not only your team members, they feel connected to the organization as a family, but so many who are connected in whatever way, whether it be a vendor, whether it be your customers, they also feel connected with your organization as a family. So the MD of the company was kind of skeptical कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? I said, हाँ, हो सकता है. Different organizations, of course, will have different ways of doing it, or different levels हो सकते हैं. किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, but एक प्रयास, एक effort तो हम डाल सकते हैं उसकी ओर. And the 2 days went on very well in terms of my sharing and my downloading. So we were coming back, and in the MD of the company, and we were in the same car together, and suddenly a phone rang, and I picked it up. And here was one Chrysalian, Tejal, and she was studying in UK that time. And she was doing her master's course in UK, and वहां से मुझे फोन करती है. वहां का सुबह होगा, मेरा शाम हो रही होगी, या दिन में जो भी टाइम था, 5-6 घंटे का फर्क होता है. So we are on our way back here to Pune, and she says, "Sir, happy birthday." So because just a few days back, 10th August हुआ था, and I said, "Thank you, Tejal," and she says, "Wish me too," because it was also my birthday, because I graduated on that day, and it's 5 years that I graduated, and that is a new life for me, and for me it's also my birthday. And I said, then I sang a song for her, "Happy birthday to you." And then those 2-3 minutes में बात हुई, we laughed, and I kept the phone down. And this MD, वो उस कंपनी का, वो मुझे ऐसे देख रहा था कि आपके बहुत नजदीक का कोई है क्या? मैं कहा नहीं, she is one of our Chrysalians, and she is नजदीक मतलब as a Chrysalian, yes, she is very close, and all Chrysalians are very close, but it's not a relative of mine who had called up. And he says, so she wished you, and you also wished her back. I said, हाँ, हमारा 10th August is annual day, and that's the way we all celebrate. So it reflects how close people have held on to their learnings, to their batches, to their association. So it's not just a transaction which people have, and I'm so fortunate. Thank you, Anuja, for sharing this from your side. It took me back to so many memories of my life.
थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, गुड लर्निंग मोड। हाँ जी, चलिए लेट्स एंड यू आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट दैट आप भी अपना कुछ ना जो भी आपको शेयर करना है, यू कैन जस्ट की इन, maybe if it connects with what I'm saying, I'll share it. Maybe I can take it ahead. Maybe I'll ignore it also. I don't know. Or maybe you want to put your hand up. You can also put your hand up to share with me. Last few weeks, I was thinking about this subject कि जो हम लोग का जो जीना है, all that which we are doing, and it's uh, not a normal life in terms of कि उठे खा लिए फिर मजे से जी लिए फिर सो गए. It's not this for all of us. We are kind of in a battle in terms of we're doing something, we are running after something, we are chasing something, we are pursuing something, and whether it be office, whether it be home, whether it be college, जो भी roles हम play कर रहे हैं, we kind of putting ourselves our best self there, and हम जूझ रहे हैं, हम अपना पसीना बहा रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं. तो मेरा एक सवाल होता है कि ये जो जो बैटल, अगर इसको कोई बैटल बोलूं, इस सबको अगर मैं एक नाम दे दूं कि इट्स अ बैटल, इट्स अ वॉर. सो द क्वेश्चन कम्स दैट we are in this war where we are putting our best. The question is this the right battle for us? Is this the war we should actually fight? कि आपने सीढ़ी लगाई है एक दीवार पे और आप मेहनत करके सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, थक रहे हो, फिर भी चढ़ रहे हो. तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हो. क्योंकि अब मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, जो सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं रहे हैं. मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो बैटल फाइट नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट हम बैटल तो फाइट कर रहे हैं. तो हम बैटल फाइट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बट उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है कि जो हम ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, क्या ये सीढ़ी, इज दिस लैडर ऑन द राइट वॉल? ये सही दीवार पे टिकी है कि नहीं टिकी है सीढ़ी? कि कहीं ऐसा हो जाए कि हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाएं, एंड देन वी रियलाइज यार दिस इज नॉट द प्लेस आई वांटेड टू बी इन. दिस इज नॉट द वॉल आई शुड बी ऑन टॉप ऑफ इट. आई शुड बी ऑन टॉप ऑफ सम अदर वॉल. तो बहुत से लोग जो है सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में लगे हुए हैं, वो सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे कि इज दिस द राइट वॉल विच आई शुड क्लाइंब, इज दिस द राइट बैटल आई शुड विन. तो हम लगे बड़े हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज विच बैटल आर यू फाइटिंग? तो आज सोचा, मैंने कहा हल्का सा इसमें कुछ इंसाइट आप लोगों को दूं, या हम लोग मिलके कुछ इनसे इसमें से लेट्स टुगेदर वॉक ऑन दिस सब्जेक्ट विच इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. तो क्या लगता है, कुछ इसमें बातें करी जाए? हाँ जी. तो सर बातें तो आप ही करिए सर, हम तो सुनेंगे. is this subject going to make is this subject going to connect with you in some way or the other? यार जितना बातें करेंगे ना, गुफ्तगू होनी चाहिए. चलो, राजस्थान से तेज बोल रहा है सर, कर ही दीजिए अब बाद में. ठीक. चलो ठीक है. सुभाष, सर बिल्कुल करिए. सुभाष ऑल्सो गिव मी अ न्यूज सर. बड़ा अच्छा एक डायलॉग मुझे याद है सुभाष, मैं शेयर करता हूँ दोबारा. आई हैव शेयर्ड इन द बैच आल्सो. सो सुभाष इज इन आवर बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम रस समझती. तो ऐसी बात चल रही थी, बात करते करते इसे, सर वी हैव जस्ट गॉट 40 करोड़ का एक आया है, क्वेरी आई है. वी हैव काइंड ऑफ हमने उसके लिए अप्लाई किया है, अप्रोच किया है. तो आई आई सेड प्रोसेस में है हमारा, टेंडरिंग प्रोसेस में है. एंड आई सेड अच्छा तो फिर आएगा क्या, ये ऑर्डर आएगा 40 करोड़ का? एंड ही लुक्स एट मी, ही सेज आएगा क्या मतलब है सर, लेंगे वो प्रोजेक्ट? आई सेड वाओ, लव यू फॉर दिस, द वे ही सेड सर लेंगे हम वो ऑर्डर हाथ में. तो आई सेड दिस इज द approach, and this is the approach, and this is the attitude one should have towards what you want to do in life. So just thought of sharing this. चलिए, अगर चंद्रमोहन कह रहा है सर ये सब्जेक्ट पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. कुछ लोग बोलते हैं सर आप जो बोलते हैं उसी में हर चीज लगती है अर्जेंट ही है हमारी लाइफ में. ओके चलो, लेट्स किक स्टार्ट. आई आपने रंग ला दिया लाइफ में. अरे रंग तो परसों आने वाला है, होली है परसों 25 की.
हाँ, तो रंग और रंग से खेलना, एंड होली इज देयर. Just want to share this, that play holy to to your heart's content. मैंने पिछले all of my 53 54 years of my life, I don't remember when I have not played holy. I have played holy to the hilt. मतलब हंगामा होता है हमारे यहाँ होली में, और 25 को भी, परसों भी हम हंगामा ही करेंगे. It's going to be a bash, tanker anchor वहां का रखा हुआ है. It's going to be some awesome hangama happening on Holi. I think it's such a wonderful festival, such a wonderful festival called Holi. And in fact, all festivals are wonderful in our culture, in our country and culture. It's all wonderful. Every festival kind of reflects a different flavor, and Holi is one such festival where I think nowhere in the world, uh, people in such huge numbers get together, and they just want to feel happy and lively. And of course, uska kabhi kabhi रूप गलत हो जाता है. People take it to some other extreme, but you just let go of everything and you say बुरा ना मानो, होली है. And so आप लोग भी होली खेलिएगा. Of course, थोड़ा ध्यान रखो पानी का, but इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना खेलो. So, and all those who are worried about water wastage and water shortage and things like that, I respect your views, but at the same time, I suggest and I say, and I am strongly sharing this, that वाटर के बारे में, पानी की दिक्कत के बारे में सिर्फ होली के दिन ही क्यों याद आता है आप लोगों को? बाकी साल भर आप लोग मौन व्रत में क्यों चले जाते हैं? बाकी साल भर आपको समझता नहीं, दिखता नहीं कि और जगह भी पानी वेस्ट हो रहा है, वहां भी आवाज उठाया करो. सिर्फ होली में आवाज उठा के मतलब नहीं है. चलो ठीक है. सर, माय टीम इज हियर. कहीं उनका यहाँ लगे कि दे आर ऑन रॉन्ग. सुशील. अक्षय के पास, सर क्रिस्टल्स ऑफिस में खेलेंगे? अरे बाबा, ऑफिस में नहीं खेलेंगे, मैं अपने घर में खेल रहा हूँ. चलो, लेट्स गो टू द सब्जेक्ट. आर वी फाइटिंग द राइट बैटल्स? आई मेट Dhrumil Shah, again another participant from my batch. Abhi, and I know Dhrumil for the last many years, and young chap, and been through a lot doing business. His unfortunately, his brother passed away, and when his brother was very close to me, he passed away, and uh, Dhrumil had to leave his job, and wo job chhod ke he had to handle his brother's business, because it was a well set business and flourishing business, and usko to time laga. I helped him out to understand business and to kind of take charge of things in the office. Unfortunately, just 1.5 years into business, he was getting his footing very strong. There was a fire in his unit, and the entire factory got destroyed. Around 30 35 crores worth of entire, and the kind of products he was into, that was highly unfavorable. Jaldi आग पकड़ गई and पूरी factory में आग लग गई. 30 35 crores का नुकसान, and production came to a standstill. He was new into the business, and challenges सामने शुरू हो गए. Now you can imagine that suddenly the entire world comes crashing down. Yes, साल सवा साल पहले की बात. And he messaged me and he sent me a video in the night. Sir, ऐसा हो गया है. And he says, I'm just standing there, sir. I can't do anything. I can just see my factory burning. This is my brother's love. This is my brother has put his life into it, and ये मेरे सामने जल रही है. And I could relate with every sentence of his. And I met him, and what more can we do than to be there, and then at this moment of time. So I was there, and I shared with him whatever I could share. And then his fight began to revive and to set up his company again. So fortunately for him, there was a smaller unit which was also there with him. So सारा small unit से वापस काम चालू किया. And the struggle started to get this जो fire वाला unit है इसको ठीक करने में, या इसको. So the first battle was with the insurance. So he met me a few days back, and he said, "Sir, बिल्कुल थक गया हूँ मैं insurance वालों के साथ." And finally, I kind of gave up, and I said, "जो तुम्हें देना है दे दो यार." I said, "Somewhere you are fighting the wrong battle. The insurance battle was never yours. Not that you got to let go
कि तुम छोड़ दो और इंश्योरेंस मत क्लेम करो. आई एम नॉट सेइंग दिस, बट यू फाइटिंग दैट बैटल, you're just putting an effort and energy into something which you're not capable of. Like, how much you know of insurance? How many such insurance claims you have made in the past? He says, sir, अभी तो मुझे मैं किताब लिख सकता हूँ insurance के ऊपर. Like, if that's what you want to do, then go ahead. Please put yourself into it. If you want to become an insurance consultant, if you want to write a book on insurance, you want to write a book on how to claim your insurance, तो आप बिल्कुल जाओ, भिड़ जाओ. तुम्हें वो काम करना है क्या? He said, नहीं सर. मैं हो गया ना, 1 डेढ़ साल दे दिया ना उसको, और समझ में आ गया कि ये अपने बस का नहीं है. Now be sensible enough. You put your energies and fight a battle of earning that 40 crores जो चले गया है. Put yourself into it and get that 40 crores back from the market. That's where the battle should be. तो सर इसको कैसे छोड़ दूं मैं कहा मैंने नहीं कहा छोड़ दो इसको. Get somebody जिसकी वो battle है. Get a consultant who's strong on insurance side. ऐसे है ना जबरदस्त लोग जिनका वही काम है, जिनको पूरा एक एक चीज समझती है इंश्योरेंस के बारे में, जिनको क्लैरिटी है, जिनका अनुभव है, जिनको पिछले इतने सालों से वो उसमें घुसे हुए. And you're going to learn things from scratch, and that's what they will take benefit of. You put some great guy, क्या होगा, कुछ पैसा लेगा ना, but at least you'll be free to focus on the right battle of yours. And suddenly I could see, so he says, हाँ सर ये तो मैंने सोचा नहीं कि ऐसा भी. मैंने कहा what do you mean सोचा नहीं? Focus on your battle. Your battle is to be in your business and go into the market and get that 40 back. In fact, with much more vengeance, much more खुन्नस, much more fire in you. कि यार ये 40 रुपये अभी कैसे वसूली कर. And many times we don't even know how years go by, how days go by, how our life goes by fighting the wrong battle. You're able to connect with what I shared. Similarly, there are many battles which you are fighting. अभी एक मेरी रील थी एंड वो रील जैसे जैसे घूम रही है, वायरल हो रही है, and I see the comments there, and I laugh at the comments. Some of the comments were there, and I was sharing with Rajesh yesterday. Rajesh Mandle he came to meet me, and I was saying, Rajesh की मुझे comments पढ़ के मुझे एक society का flavor समझ में आ रहा है. And a lot of the comments are from youngsters who are working in companies. So मेरी एक reel है जहाँ पर मैंने बोला है, if you really want to become a leader, the fastest, then see if you have something in your workplace which is unattended to. कोई काम ऐसा है जो अधूरा है, या कोई काम ऐसा है जो जिसको कोई नहीं कर रहा है, कोई काम ऐसा है जो लटका हुआ है जिसको कोई करने के लिए कोई, तो वो that work job is waiting for somebody to pick it up. So can you go and pick up things? Can you go and pick up things? Because in a growing organization, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, तो कुछ सब चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, सब चीज ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इतना सोचे, इतना प्लान नहीं होता है. So as organization grows, a lot of roles and responsibilities start coming out, जो पहले नहीं सोची होती हैं. So उन roles और responsibilities कौन निभाएगा? So if there's a person who can just who has the attitude and approach that I will pick it up, I will pick it up, I will pick it up. तो उस अप्रोच से क्या होता है, वो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा तेजी से आगे ग्रो करता है. सो मेरा ध्येय मेरा ये था कि यार डोंट जस्ट गेट फिक्स्ड इनटू योर रोल कि मुझे तो ये बोला गया मैं ये करूंगा. देयर कुड बी समथिंग बिगर व्हिच यू कैन हैंडल, एंड द वंस हु पिक अप दोस बिगर थिंग्स, दे आर द वंस हु ग्रो फास्टर. सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स, यंगस्टर्स के कमेंट्स आए हैं, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन चूस लेती हैं लोगों को. एक ने लिखा, सर जो चाटता है लोगों को, अपने बॉसेस को के पैर चाटता है, उन्हीं उन्हीं को ग्रोथ मिलती है. कोई बोलता है कि सर किसी को परवाह नहीं है हमारा, हम कितना काम करें, एंड कोई रिकॉग्निशन नहीं देता. सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कमेंट्स. तो मैंने कहा ये वेयर आर वी, what is the society, or what is this workforce into, what सोच, what thought process they have. एंड ये बड़ा चिंता वाला विषय है कि किस तरह का वर्कफोर्स तैयार हो रहा है जो किसी काम को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है. वो कह रहा है कि नहीं सर ये
दिस इज नॉट द वे इट इज टू ग्रो. एक आध एक्सपीरियंस आपका गलत हो गया, मे बी ऐसा हो सकता है आपकी कंपनी में ऐसा हो कि जो चापलूसी करता है वो आगे बढ़ता है. ओके, अग्रीड, इट मे हैपन. ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जिसने ज्यादा काम किया उसको और काम मिलता है और वो उसकी कोई कदर नहीं होती है. अग्रीड, हो सकता है ऐसा. बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो आपने उस गलत को देख के आपने सही करना बंद करना चाहिए. ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता. सो आई सी लॉट ऑफ पीपल देयर कि द बैटल इज टू मेक माई सेल्फ अ विनर. दैट्स द बैटल आई शुड बी फाइटिंग. The battle is not about how the world is behaving, and because of that, I will not do. That's not the battle you're into. Your battle is with yourself, that how do I make myself better? The battle is how do I make my company grow? That's a battle you should be fighting. And बहुत से entrepreneurs में देखता हूँ, बहुत से leaders में देखता हूँ अपने organizations में, they're fighting small चिंदी battles. Fight a battle which suits your profile, ना. वो लड़ाई लड़ो. आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जो कोई और लड़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं लाते हो, इसलिए आप वो लड़ाई खुद लड़ रहे हो. So if you really want to make your life worth it, then you got to pick and choose the right battle. Long back, some of you know the story who have been with me, somewhere in 2006 or 7 की बात है. I think 7 के आसपास की बात है. During early days of, so I have been always been thoughtful about it, that money is very important. And the best way to make money is when money grows when you're not working. So I've been on the investment side, and I have always spoken on this, that whatever your capacity is, invest. Even in my team, I tell, even in my office boy is there. He's got my office boy. He's got his monthly systematic investment plan going on. So every month, some investment goes from his salary to his to in some mutual funds or some other place, so that the corpus is being built over a period of time. So ऐसे 2006-7 में I had some corpus which was built. Unfortunately, I met somebody. You are in that, and I am a naive guy. I always believe in people. I trust people like this. A drop of a hat, I trust people, and that's my nature. So I trusted somebody, and he kind of fleeced me of all my savings, around 30-40 lakh rupees got fleeced. And मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी, आज भी बड़ी बात है, तो उस समय उसमें तो मेरी पूरी, ऐसा लग रहा था पूरी जिंदगी हिल गई. And one day I was having 30-40 lakh rupees in my account, and second day I realized that man vanished with all my savings. तो एक मीटिंग बुलाई गई. उस मीटिंग में मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे 18-20 लोगों का पैसा लेके वो इंसान गायब. And everybody was talking about now what to do. Should we file a police complaint? Should we do this? Should we do that? And I sat in that meeting for around 15-20 minutes. And I was sitting there. First few minutes से मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या. Then I got a hang of it कि अच्छा ये 18-20 लोग हैं, and everybody's talking, किसी का 30 गया, किसी का 40 गया, किसी का 20 लाख गया. And that the scam is for a few crores. 15-18 minutes, I don't think even 20 minutes happened. 18 minute, 19 मिनट में मैं उठा वहां से. And I said to everybody, thank you so much for calling me. I'm leaving. And they all got shocked कि हम यहाँ plan कर रहे हैं कि how to get hold that scoundrel and put him in behind bars, या पुलिस केस करें या क्या करें, और आप तो जा रहे हो. तो आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम यहाँ बैठ के क्या होगा, but this is past for me. This is gone. This is not the battle I want to fight. I want to fight a battle where I want to ask myself, how do I make another 30 lakhs? I'm going to fight that battle. And that was the last moment or last day और लास्ट इंटरेक्शन विद दैट ग्रुप. मैंने जिंदगी में दोबारा उस ग्रुप से बात नहीं करी, ना मैं उस मीटिंग में गया, ना मैं उन लोगों से मिला. वो क्या हुआ, उनका पैसा मिला नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम. I never fought that battle. That was not my battle. I looked ahead and I went ahead to fight my battles.
So the question to all of us is, you got to ask yourself every time and again. आप गाड़ी चला रहे हो and somebody overtakes you in a way which you should not be overtaken, या फिर उसने कहीं हॉर्न ज्यादा बजा दिया, is that the battle you should fight? एंड आप उस बैटल में अटक जाते हो, ऐसे हॉर्न बजाता है, ऐसे काटता है, मैं दिखाता हूँ, अरे इज दैट योर बैटल माय डियर? और ऐसी बहुत सारी बैटल्स हैं हम फाइट कर रहे हैं. In office, I see people struggling. Arey, that is not your battle. Get somebody else who will fight the battle. That is not your job. Arey, get a driver. You struggling on the streets of Pune, itna traffic hai. That's not your battle. If you're an entrepreneur, if you're a leader, if you are capable, if you are, आप इतने अगर सक्षम हो कि किसी की पगार निकाल सकते हो 15-20 हजार रुपए महीने की, वो पगार का आदमी लेके आओ, ड्राइवर रखो. Don't fight that battle of driving on the streets of Indian cities. नहीं नहीं सर, मुझे बड़ा शौक है ड्राइविंग का, तो गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव ना, or go take a metro, take a cab, but don't fight this battle, because you're fighting that battle and you're reaching tired, exhausted to your office. सटका हुआ दिमाग लेके तुम पहुंचते हो ऑफिस, कितने लोगों के खानदान को याद करते हुए पहुंचते हो ऑफिस. Is that the battle you want to fight? ओहो. तो बहुत से लोग 20 साल पुरानी गई हुई बातों को लेके फाइट कर रहे हैं. I did not connect with those guys again. It so happened after 4 or 5 years, I was taking a program on leadership, and 2011 की बात हो. So there were many other participants, some Chrysalis, some knew the story of mine that I had been fleeced of some money and things like that. So होता है, आदमी बोलता है यार ऐसा सर ने बोला है, शायद कह दिया होगा, डायलॉग बाजी कर दिया होगा सर ने कि दोबारा नहीं गए. ऐसा होता है कि वो अपना पैसा छोड़ देता है क्या, होता है लोगों को. तो I never cared, I never bothered about what people say. That's not my battle. So in that program, there was one gentleman who came and asked, who met me, and सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तो break time में he came and asked me, Manish Gupta, I remember this. Are you the same person? मैं कहा, which person? The person who was there, उनका भी ऐसे कुछ fleece off हो गया था, कुछ पैसा निकल गया था. आप क्या वही हो? मैं कहा, आपको कैसे मालूम, ये खबर कहाँ से आई? कहने लगा, मैं भी उस हॉल में था, and I was surprised कि ये इंसान उठ के कैसे जा रहा है. तो मैं कहा, अच्छा आप भी थे, आपका भी पैसा गया? कह रहे, हाँ मेरा भी पैसा गया था. तो फिर मैंने कहा, क्या हुआ? कह रहे, सर कहाँ मिलता, कुछ नहीं हुआ, हम लगे रहे 3-4 साल से, बहुत पीछे पड़े, इधर पुलिस केस किया, उधर गया, उधर कहीं नहीं मिला. लेकिन आप तो कमाल है, आप तो एक बार भी नहीं आए. तो मैंने कहा, अगर मैं वहां आता तो क्या आप मेरे यहाँ आते? ये मेरा रिकवरी चालू है उसका. तो so I have always been of that कि यार let's choose a battle which is worthy of fighting, right? And हम सब आए यार, इस planet में आए, इस दुनिया में आए, इस universe में आए. There's a battle which we have to fight for. That's for sure. The question is which level की battle, which level की battle. क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग मेरा? सर आंखें खोल दिया आपने, अरे बाप रे. आंखें खोल के रख जीना भी एक बैटल है भाई. Today's thought stuck in mind. Check battle. That's right. Of course. मतलब होता है, दिमाग सटकता है ऑफिस में, इधर जाओ कहीं घर जाओ. But is that the battle you should get indulged in? Rishi says, love you, sir. Realize I'm fighting the right battle and on right path. Also because of you, I believe past is past. It's gone. Let's focus on present. Absolutely. Love you for this. For women, pain is inevitable. For worries, pain is inevitable. Suffering is optional. चलो ठीक है. For pain is inevitable, suffering is optional. Absolutely. तो कितना सफर करना है आपने? चॉइस इज आर्ट्स. वो दर्द, जो चोट लगी घाव तो है, सफर कितना कर. कुछ लोगों को सफर करने की इतनी आदत हो जाती है, सफरिंग, मैं इंग्लिश वाला सफर मैं बात कर, तो आपको सफरिंग की इतनी आदत हो जाती है कि वो घाव हील हो गया है, लेकिन आपको आदत पड़ गई है सफरिंग की, तो आप सफर ही करते रहते हो.
and it kind of becomes a sadistic pleasure for you. I'm a housewife, but using your thoughts in my life. Thank you for that. Entrepreneurs should play. So, as a housewife, the battle you should fight is a great environment at home, isn't it? You should fight for that. कि घर का माहौल इतना बढ़िया हो कि children want to stay at home, the hubby wants to come back home early, कि वो ऑफिस से लड़ झगड़ के मैं जल्दी घर जाना है. क्यों? क्योंकि मेरा घर का माहौल बहुत बढ़िया है. Because his wife has been fighting to create an environment. And अब सुधा आपने बोला तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. So that's the battle you got to fight. That I got to make a wonderful environment at home, and so that everybody who stays at home should long to come here. चाहे वो एनवायरनमेंट आप बनाए कुछ इंटीरियर्स करके, कुछ लैंप्स लगा के, कुछ घर की साफ सफाई रख के, चाहे वो खाना अच्छा बना के, यू डिसाइड, चाहे म्यूजिक लगा के, आप डिसाइड करो वो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा. लेकिन व्हेन यू फाइंड द रॉन्ग बैटल, कि आप काम में इतना व्यस्त हो गए हो, आप ही मतलब आप वो घर आपका हस्बैंड आता है और डोर में रिंग रिंग टिंग टिंग करता है, जैसे दरवाजा खुलता है तो देखता है कि सामने उसकी वाइफ नहीं बाइक खड़ी है, क्योंकि वो इतनी हैरेस्ड है, इतना वो काम वाम करके परेशान, हैरान परेशान है कि वो कहता है यार ये मेरी वाइफ जो है, शी इज सो वर्कड अप. तो कहीं ना कहीं आप यू आर फाइटिंग रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग कि वो काम आपने नहीं करना चाहिए या काम नहीं होना चाहिए घर में, बट मे बी देयर इज समबडी हु कैन बी कॉल्ड टू डू दैट वर्क. And all the ladies are, I feel, they are all intelligent. They are much more intelligent than the men at work in the office. They know how to delegate work. They will get the best of mates to help them out, and they would kind of create that environment. So that's the battle you got to fight. Create an environment at home, which is, so don't nag. That's not your battle. The more you nag, the more this husband of yours will stay away from home. Right? But the more you create a great environment, the more he will come like a dog wagging his tail home. Husband, I'm sorry I called you a dog. हाँ जी सर, भारी हैप्पी माइंड्स हम सही ट्रैक में. सर सारे हैप्पी माइंड्स हमें सही ट्रैक में रखते हैं. ठीक है, लव यू फॉर दैट. चलो, बट सर हाउ डू आई थिंक बिग इन माय ओन बैटल? हाउ डू आई थिंक बिग? चलो करेंगे इसमें बात कभी. आ जाओ मेरे किसी प्रोग्राम में, विल मेक यू थिंक बिग. I always say through the same thing. But once you said do not go those meetings, and then I just focused on other battle to earn money which I have lost. Very good, Santosh. I have posted one question in Q&A. Request you as well to start something which I put around. ठीक है, देखता हूँ मैं. Oh, software 14 years and started manufacturing unit with our family friend and ran it for 3 years till 2020 after COVID. I exited and started my own B2B sales and later closed it down in 1 year. Then I joined a healthcare startup. It's been 2 years now. The startup is now also closed down. I want now to give a new breath to my earlier B2B SaaS startup. How can I get some guidance from you, sir? Santosh, this is, if you want guidance from me, the guidance has to be on something which is very clear. What you have asked, what you have shared with me is a general statement, a general picture of your current business life. For any guidance, we need to have a very structured question which is there. So what is that thing which you want guidance from my side? So if you want guidance from my side about the entire business side, I would suggest that you come over for one of my sessions. I think the one session is happening on 12th of April. So it's going to be a 4-hour intervention. So हम 4 घंटा सिर्फ business के बारे में बात करेंगे. Maybe in that session of mine, you will get some clarity on what can be done, what should be done from your side. So that's the guidance as of now from my side to you, that you have to give a longer time to it, and of course you have to structure your expectations in a way that this is what I need guidance on. So maybe I would be able to guide you on that, but I would strongly suggest that be a part of my growth summit.
which is a 4-hour masterclass on handling uh, challenges in business and also ensuring that what pathway you should pick up, choose to take your business to the next orbit. तो आप उसमें आओगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा आपको सजेशन रहेगा. You can get in touch with my team. They will guide you, help you for the registration formalities. Great. So my team will get in touch with you, Santosh, for that. And all of you who have heard me on this, you can also send your entrepreneur friends. We need a lot of entrepreneurs coming over. Okay. So all those who are listening to me in Happy Minds, I'm fighting that battle. I'm fighting a battle of making entrepreneurs live much more uh, a much more composed life. I'm fighting a battle where I'm making entrepreneurs. I'm struggling to make entrepreneurs much more uh, to live a much more holistic life where they come home happy, where they go to the office happy. I'm struggling. I'm fighting a battle where I'm making entrepreneurs create a very powerful environment in their workplaces. जो उनका workplace है, it should be an awesome place to work in, where people grow, people are happy, people connect, people bond, people are able to contribute in some way. And that's the battle which we all got to fight. So मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सब आए हैं इस दुनिया में and we are here with a battle of ours. वो बैटल कौन से लेवल की है वो हमें डिसाइड करनी. तो तुच्छ बैटलों में अटकना नहीं है, लो लेवल की बैटल्स में बिल्कुल अटकना नहीं है, बिकॉज देयर आर हायर बैटल्स. So you got to keep on asking yourself time and again, hey, is this the right battle? If not, then why the hell am I putting myself into it? Let me pick up a right battle. I mean, a few days back, I'm sure all of you must have heard about Sadhguruji in the hospital, and he had to go through a major, some surgery had to be done, and it was a very life-threatening situation which he went into. And every day from the time I heard about it, he has been in my prayers, and I am sure he's going to bounce back real fast. But the more I think about this phenomena, I would not call him a human being. He's a phenomena which is there in this world of ours, and I'm so blessed that I'm born in the era which he is living also in. And I'm blessed that I had the privilege to be with him, on a few occasions. And me and Rachna, we were there, and he was just having meal next to us, and the vibrations and the vibes and the smile, and as we were having meal with him, um, way back in 2013, 14, I still have that memory so clear in my mind. And we just were there, and that moment was enough for us. And when I look at him and I say, look at the battle he's fighting. Whether it be soil conservation, who is fighting that battle? सब अपने बिजनेस में अपना पैसा कमाने के लिए लगे पड़े हैं, but एक इंसान जो है, he's fighting a battle to conserve the soil in this planet. He's fighting a battle of river rejuvenation, कि कैसे नदियां वापस वो पानी लेके निकले जो उनको होना चाहिए. So he's fighting battles which are not even thought of. तो क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी बैटल फाइट कर रहे हैं. And when I read some उनके पोस्ट उनका जो आया अभी एक, so there are people writing, making videos on him that he is a yogic, he's a वो बोलते ना गॉडमैन है और ये गुरु है, तो इनको तो मेडिकल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इनको तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था, इन्होंने खुद ठीक करना चाहिए था. अरे क्या बकवास चालू है. Did he ever claim he's God? Did he ever claim that there's an all cure with him? He's a human being. And he's a human being at a very high level than us because he has taken his consciousness to that level. और वो कैसे मालूम पड़ता है कि कोई इंसान जो है किस लेवल का है, वो कौन सी बैटल फाइट कर रहा है, उससे मालूम पड़ता है. ये जो चिंदीगिरी के जो सोशल मीडिया में फाइट करते हैं ना, इनका लेवल वहीं से मालूम पड़ता है कि ये तुम कौन से लेवल के हो. तो आपने भी देखना है कि कौन सा इंसान कौन सी बैटल फाइट कर रहा है. शुड आई कनेक्ट विद दिस गाय और नॉट? एंड देयर इज नो पॉइंट कनेक्टिंग. There's no point being with somebody who's fighting a very low level battle. उसके साथ कनेक्ट करके हम भी वही फाइट करना चालू कर देंगे. So connect, join, be with somebody who's fighting a higher level. And you pick up your battle, which are worthy of fighting. Otherwise जिंदगी निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा और हम कुछ अच्छी लड़ाई लड़े बिना इस दुनिया से निकल जाएंगे. And I want to tell you this, लड़ाई तो लड़नी है यार, लड़ाई तो लड़ ही रहे.
तो जब लड़ रहे हैं लड़ाई और हो ही रही है, तो फिर why not pick up the right battle? Why not? So this week is the week where you got to ask yourself consciously, all from morning till night, the battles you're fighting. बेड में लेटे हो, कौन सपनों में क्या फाइट कर रहे हो? उठो यार, go and fight the battle in the gym. Go and fight there. लोगों का सुबह का बैटल है, उठूं कि नहीं उठूं? ये कोई बैटल है फाइट करने का? लुक एट द बैटल इन द माइंड ऑफ द पीपल. अरे यार, 1 घंटा और सोने को मिलता. येड़े, ये बैटल है फाइट करने का? And we are engrossed, we are fighting such low level battles. Yeah, please pick up the right battle, please. हो. हाँ जी. तो आज कुछ पिकअप किया कि नहीं किया? हम्म? आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, since you are coming to Happy Minds, you're it's a reflection that you are in for the right thing. Right? Now take it further. Take it to your life. Be conscious. जागरूक रहो कि मैं हर समय कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूं. Is this for me? Is this my level? Should I be engaged in this battle? And if I got to be engaged, then I will give my wholehearted effort, my entire self into this battle. फिर मैं पीछे हटने वाला, फिर मैं कहीं रुकने वाला नहीं, फिर मैं थमने वाला नहीं. और ये लड़ाई मेरी है ना, फिर मैं अपने आप को झोंक दूंगा उसमें. बट पहले पता तो करो लड़ाई तुम्हारी है कि नहीं, तुम्हारे लेवल की है कि नहीं. एंड पिक अप सम ग्रेट बैटल्स. सो was it a was it a worthy battle to be there in HM today? Was it the right battle for you to be there for the last 1 hour with me? Hmm? सारा वर्ल्ड वॉर भी लड़ लेंगे आपके साथ. हम सब का विकास. आई लव यू अक्षय. आप सबके साथ हम सबका सर हिला डाला. अरे जाओ सुशील, जंग जीत लो अपनी. हाँ, there are different battles to fight यार. Come on. खाने में क्या बना है, ये कोई बैटल है लड़ने की? खाने में दाल में नमक कम है, अरे ये कोई लड़ाई लड़ने की? There are bigger battles to fight. क्या भी अहिंसा की पुजारी रत्नाली. Will it be better to choose alignment? See, getting people into alignment is also a battle, right? I'm talking battle. मैं ऐसा मार काट की बात नहीं कर रहा हूँ रत्नाली. मैं बात कर रहा हूँ कि किसी जंग में जाने के लिए जो एक जुझारूपन लगता है, जो पागलपन लगता है, जो पैशन लगता है, जो मैडनेस लगता है, जो जिगर लगता है, जो कलेजा लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अगर अलाइनमेंट में भी लाना है किसी को, या अलाइनमेंट में जाना है किसी के साथ, उसमें भी जिगर लगेगा, पागलपन लगेगा, जुनून लगेगा, पैशन लगेगा, मैडनेस लगेगा, करेज लगेगा. Am I right or not? I'm talking about that battle. I'm not talking about कि actually जाके मार काट. So remove that हिंसक word from your mind. Battles are not about हिंसा only. The line, आप जो बैटल लड़ते हो उससे आपका लेवल पता चलता है. Is very much punchy, sir. Oh, absolutely, Ganesh. आप देखो ना, आप आसपास देखो, everybody is fighting. There's nobody who's not fighting a battle. Everybody is into something. वो कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, डे इन एंड डे आउट, उस लड़ाई से उसका लेवल मालूम पड़ता. सो कितने भी सलूट किया जाए कम लगते हैं. अरे वाह, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर igniting my passion, igniting me to go on and on this pathway of mine. चलो, आज का हाशिम हिब्राम लेते हैं. आप सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं जो आपने लड़नी है. लड़िए लड़िए, मेरा गार्डन मुझे बुला रहा है. I have to fight that battle. I have to टेक केयर ऑफ माई गार्डन. देखता हूँ कौन से फूल पौधे सब्जियां क्या उग रही हैं, क्या नहीं उग रही हैं. जरा मेरा वीकली एक्टिविटी है. कुछ ड्रम स्टिक्स तोड़ता हूँ, कुछ टमाटर तोड़ता हूँ. एंड आई विल हैव अ कप ऑफ टी.
with my best half. Otherwise वहां एक battle चालू हो जाएगी. I don't want the battle to happen there. चलिए जी. HM is training to fight the battle. Each session, each word teaches us a lot. Thank you so much. Love you, Pooja. Love you, Sukda. Thank you so much, all of you, for being there, and love you, Mangesh.